बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है इस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम CBOs भी कहते हैं। कम्युनिटी के अंदर काम करते हुए बहुत सी CBOs जो हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वास्ता भी पड़ता है, कायम भी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या, व्हाट इज़ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CBO कहते हैं। Community-based organizations are represented by different names in different regions. Like Community Development Association, इनको Community Development Association भी कह सकते हैं, Societies भी कह सकते हैं, Welfare Organizations भी कहा जाता है, Neighborhood Councils and United Community भी कहा जाता है। तो different communities में, different जगहों पर, different regions में इनके different नाम हैं। जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, ये community-based organizations हैं। A CBO is an organization that provides social service at the local level. यानी CBOs क्या हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं लोकल लेवल के ऊपर. It is non-profit organization whose activities are based primarily on volunteer effort. तो ये याद रखिएगा इस बात को कि CBOs के अंदर ज़्यादातर volunteers efforts होती हैं. This means that CBOs depend heavily on voluntary contribution for labor, material and financial support. करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं CBOs के, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या होते हैं? इट्स सबसे पहला है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इट रिलाइज ऑन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, ज़्यादातर जो इसका रिलायंस होता है वो वॉलेंट्री एफर्ट्स के ऊपर होता है। लोग वॉलेंटरली ये बनाते हैं और इसके अंदर काम करते हैं। इट एक्ट्स एट द लोकल लेवल, और आम तौर पर ये लोकल कम्युनिटी के लिए काम करती हैं और लोकल लेवल पे इसकी डेवलपमेंट होती है। इट इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोकल कम्युनिटी को और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द पर्पस ऑफ CBOs इज टू प्लान, implement and monitor social and economic development programs and provide technical and financial help to the communities. CBOs positively affect the process of rural change, for example, increase in income, improvement in health, nutrition and literacy status of the population। के अगर रूरल एरिया में काम कर रही है तो इनका मकसद ये होता है कि वहाँ की वो लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लेके आए, हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आए, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे या लिटरेसी में इजाफा करने के बायस बने। Some of the programs that can ensure bringing change in rural communities are availability of microfinance for the micro enterprise, health and education, sustainable agriculture, safe water and sanitation. फंडामेंटल्स ऑफ फॉर्मिंग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वेदर द CBO इज ऑर्गेनाइज as an informal steering committee, a traditional board committee, or as complex network of organization, there are several fundamental questions that should be answered by all startup organization। और वो questions जो हैं वो कौन कौन से question हैं? What do we want to do before एक CBO बनाने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो करना है अपने आप से वो ये है कि व्हाट डू वी वांट टू डू, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है, हम पहुंचना कहाँ पर चाहते हैं और हम अचीव क्या करना चाहते हैं। टू डिटरमिन दिस, मेक श्योर यू आर आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन। द इनिशियल क्वेश्चन शुड नॉट बी हाउ डू वी बिकम अ CBO, but it should be how can we get a better and more affordable housing for all. What is the target, what will be the target of this CBO? डेस्टिनेशन क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं। कीप फोकस ऑन द डेस्टिनेशन, वही बात कि उनके किस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, नॉट द व्हीकल इन विच यू आर ट्रैवलिंग। This is not always an easy as it sounds, especially in the formative stages of group process when strangers come together to pursue our passion. Some will very type A and get bogged down in the mechanics of organization. Other will so driven by the passion for the project that they will want to skip important foundation building requirements. इज देयर एनीवन ऑलरेडी डूइंग दिस? दूसरा क्वेश्चन जो CBO बनाने से पहले जो है आपको करना है वो ये है
कि क्या कोई पहले से इस तरह का कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा. The next logical question would then be, is there anyone else already doing this? Determine if there are organizations already addressing your concern, because the best interest of the community are not served when too many organizations compete for the same resources. तो अगर ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रही है तो बाज़ औक़ात हो सकता है कि हमें रिसोर्सेज की कमी हो जाए, और रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं. If there are other, you may elect to simply join their group, or to proceed with establishing your organization and form a collaborative agreement with the existing organization, or to focus on another issue in the community development. Just be sure you are not fragmenting scarce community resources with your एडमायरेबल ज़ील ऑफ डू गुड. अगर ये आप देख रहे हैं कि वहाँ पे और कोई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो आपका कंसर्न है, उस कंसर्न के ऊपर, तो आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप उनके साथ जॉइन कर लें. अगर आप उनके साथ जॉइन नहीं करते, तो आप अगर अपनी सीबीओ बनाते हैं तो कोशिश करें कि आप जो पहले से मौजूद ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करें कि आप लोग मिलकर काम करेंगे. अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो फिर आप कोई और कंसर्न चूज कर लें और उसके ऊपर कोई सीबीओ बना लें. मिशन एंड पर्पस. A clearly defined mission statement is critical, but even more critical is its constant use to guide strategic decision making. It establishes that what will be done, who will be involved, and how the community will be affected. The mission statement is what keep your ship in the correct ocean. यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, और पर्पस क्या है. अगर आपके जहन में ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी सीबीओज बनाते वक्त, तो आप एक राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते. While crafting the mission statement, it is important to recognize that there are 4 different type of community development function. वो कौन से functions हैं? Number 1, organizers, developers, planners, and resource providers, and that each has different purpose and expected outcomes. Is the organization is feasible? अगला क्वेश्चन क्या पूछना है हमने अपने आप से कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना फिजिबल भी है या नहीं है. A work cost support by a workable plan with sufficient funding and competent leadership will be generally generate sufficient organizational capacity. This capacity includes क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है. शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, professional and volunteer staffing with effective leadership and management skills, sufficient available facilities and equipment, sustainable financial resources, and sufficient cash flow to provide for the organizational operation. कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए आपके पास sufficient cash flow होना चाहिए. Next question जो है, is there a business plan? The most important use of business plan is to the ground of the organization in reality and provide operational guidance for daily decisions. A business plan should include a description of the organization कि organization क्या करने जा रही है, what it will do and how it will help. Marketing दूसरा जो है, marketing plan क्या होगा उसका, who will be served and how they will be reached. A financial plan, startup financing, expenses, revenues and cash flows. A management plan, description about the management team experiences. A business plan increase the chance of securing funding, help identify strengths and weaknesses of the organizations, and provides a way to measure actual results against the what was planned. तो आज के इस लेक्चर में हमने सीबीओस के बारे में पढ़ा कि सीबीओस क्या है, और सीबीओ को बनाने से पहले कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सामने रखना है और अपने आप से पूछना है, और उसके बाद हमने किसी कम्युनिटी के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या सीबीओस कहते हैं.